Hello, my dear students. So here are we once again. याद है हमने कहाँ पे छोड़ा था? तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की, राइट? है ना? तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या डिस्कशंस किए थे और उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ. Before that, do not forget to like, subscribe, and share so that you can have the glimpses and the glances of all the chapters and discussions for a better understanding and revision. As I said, mool mantra of success is understanding and then revising and then reflecting. तो ये सब हमारे इन लेक्चर्स के थ्रू हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग, लेट अस प्रे टू गॉड कि जब हम बैठें पढ़ने तो हमारा दिमाग पूरी तरह से अलर्ट रहे, हम लोग सब कुछ अच्छे से समझें एंड देन वी गो अहेड, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हमने सबसे पहले बात करी थी ग्रॉस स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने बात की थी. विल स्टार्ट विद द डायग्राम ओनली, वी आर नॉट नाउ राइटिंग. सो सबसे पहले हमने बात करी थी कि एवरी सेल विल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, राइट? ये बात हमने किया था. एंड सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली a selectively permeable membrane or a semi permeable membrane. प्लांट सेल्स में उसी को कवर करते हुए, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में उसी को कवर करते हुए हमारी दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है कवरिंग लेयर, दैट इज द सेल वॉल. oops, I'm so sorry, we'll undo this so that we can create it better, right? Oh yeah, right. And this is the cell wall. We also talked about differences between cell membrane and cell wall. Cell membrane is semi-permeable, cell wall is freely permeable. Cell membrane is living while cell wall is dead. Non-living cell membrane is made up of lipids and proteins, while cell wall is made up of cellulose. Cell membrane is present in both animal cells and plant cells, while cell wall is present only in plant cells, right? Then, because we have created this, now all the cells in the world have this ground substance which is called as cytoplasm, right? And we talked that this cytoplasm is actually the site of all the chemical reactions which take place in the cell, है ना? ठीक बात है ना? राइट. तो अब इसके बाद then the other important structure in a cell is a double layered spherical structure called as nucleus, right? और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस called as nucleoplasm, right? Then a small spherical structure called as nucleolus and thread-like structures called as chromatin fibers or chromatids, correct? ये चीजें हमने ऑलरेडी बात कर ली थी. अब हम आते हैं बाकी के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन पर, राइट? अब जो बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है. Sausage shaped it has the structure, right? It is a sausage shaped structure, correct? And is a double membranous structure. Now its inner membrane, see, it's a double membrane structure and its inner membrane is folded into finger like projections like this, right? And these finger-like projections are called as cristae, correct? So mitochondria is sausage-shaped double membrane and has cristae. It also has its own genetic material. तो ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया के यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है? अब
let us draw the mitochondria in our diagram. Yes, let us draw it here somewhere, right? Yeah, ठीक है जी. So this is our mitochondria. Right, and what is the function of mitochondria? Mitochondria is responsible for giving the energy to the cell. That is why it is called as powerhouse of the cell. Now, why is energy required? For all the functions. In what form is this energy found by the mitochondria, given by the mitochondria to the cell? In the form of ATP, that is adenosine triphosphate, right? It is released through pyruvic acid during respiration. On that note, we also should know that mitochondria is the site of synthesis of respiratory enzymes as well, right? तो mitochondria actually क्या काम कर रहा है? दो काम कर रहा है, giving energy to the cell in the form of ATP and synthesizing respiratory enzymes, right? ध्यान रखिएगा इस बात का. ठीक है. Now the another structure which is very very important is endoplasmic reticulum, right? Endoplasmic reticulum is basically an irregular, right, tubular and double membrane structure. Tubular and double membrane structure. Correct? Right? And it is from cell membrane. Continuation इसका जो होता है वो cell membrane से लेके and till nuclear membrane it continues generally. Right? We'll make it here again in our diagram. Let us say for example यहाँ से बनाते हैं तो ये ऐसे tubular double layered structures होते हैं. राइट. सो देखिए मैंने इसमें क्या किया. इम्पोर्टेंटली आई हैव कनेक्टेड इट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू सेल मेम्ब्रेन, राइट. और गोल्जी बॉडीज की एक खास बात क्या है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, wrongly said. It is basically